Hello children, how are you all? I hope you all are doing well. So children, today in this class we are going to learn about patterns. So let's start with that. A pattern in an arrangement of lines or shapes, especially a design in which the same shape is repeated at regular intervals over a surface. पैटर्न हमारे होते हैं या तो वो लाइंस होते हैं या कुछ रिपीटेड एक इंटरवल्स में वो रिपीट होते हैं. ऑब्जर्व द सीक्वेंस शोन बिलो जस्ट लाइक दिस. ओके, दिस इज सर्कल, स्क्वायर, देन ट्रायंगल, अगेन सर्कल, स्क्वायर, देन ट्रायंगल एंड अगेन सर्कल. ओके, in this sequence a circle comes first, then a square, then a triangle, again a circle, then a square, then a triangle and so on. Hence the above sequence form a pattern. तो हम कह सकते हैं ये हमारा क्या बन रहा है, पैटर्न. पैटर्न्स इन नंबर्स. अब नंबर्स के पैटर्न क्या होते हैं, वी विल लर्न अबाउट दैट. Some number patterns are formed by adding the same number to the previous number every time, okay? And some are formed by subtracting the same number from the previous number every time. Let's see the example. For example, 6. तो 6 हमारा कैसे बना, 3 + 3 = 6. अब जब हमारे 6 बन गया तो 6 में 3 ऐड करा, then it becomes 9. 9 बनने के बाद 9 में 3 ऐड करा, इट बिकम्स 12. ओके, नाउ दिस इज 30. 30 कैसे बना, 35 - 5 25, 25 - 5 20, और जो हमारा 20 बचा उसमें से भी हम 5 माइनस करेंगे, देन वी विल गेट 15. So this is the pattern, -5 - 5 - 5, and this is +3 + 3 + 3. I hope you understood the concept of patterns in number. Okay beta, so now move on next one. Patterns in letters. अब letters के pattern क्या होते हैं, let's see. Some patterns in letters can be formed by repeating letters in a particular manner, okay? For by skipping some letters or by writing capital and small letters, just like this. For example, A, then B, C skip, D, D के बाद E, F नहीं है, G, H, I नहीं है, J, then K, L नहीं है, M. So this is our pattern, okay? Similarly, capital A, small a, capital B, small b, capital C, small c, and so on. So this is called, letters pattern. Okay, I hope you understood. So now next one is, look at the number patterns and filling the missing numbers. Just like 40, 48 से पहले 38, 36, 34. So 34 से पहले बच्चों 32, क्योंकि इसमें 2 की स्किपिंग हो रही है बट बैकवर्ड काउंटिंग. 32 से पहले 30, देन 28, और उससे पहले आता है, yes you're right, 26. So this is called pattern. Similarly 15, then 30, then 45, then 60 and so on. Okay, I hope you understood the concept. So now move on next one. Write the numbers that comes next in each of the given numbers. 1A, 2B, 3C, then उसके बाद आता है बच्चों 4, C के बाद D, then 5, D के बाद E, then 6, E के बाद F, and then 7G. So write it 7G over here. Okay, so this is how we do the letter pattern. I hope you understood. So now next is, complete each pattern by drawing 2 more design. Okay, so this is design like this. So these are like ये वाला हमारा इस साइड पर है और ये इस साइड पर. So these are 2 related with that, and here is like this. So we have to make it like first one repeat again like this. Okay, हम ऐसे बनाएंगे इसको और इसको हम बनाएंगे इस तरीके से. ओके, और जो हमारा यहाँ पर ये वाला डॉट है इसका हम ट्रायंगल करके कुछ समथिंग इस तरीके से बना देंगे, और इसमें हम कर देंगे, दिस इज बेटा रफ डायग्राम. you have to make it very nicely at your notebook. Okay, so I hope you understood the pattern or letters. Okay, very nicely. So beta, with this we ended the chapter. I hope you understood well. So just keep
Practice and do rest of these question answers by your own.